All right. Hi. So it's really, really nice to see you here. And great that you performed really, really well recently. So, first of all, this is the first time we're interacting, and it's been some time that probably you contacted us. So, just take us through your journey. And you being an officer, did your time allow you to study as much? And what is the motivation to study at this juncture in life? All of that. The thing is, sir, मतलब 5 साल गवर्नमेंट जॉब करने के बाद देख लिया कि Hmm. we can't if we can't change the system, we have to change our fields. Yeah. And that's why I have inclined towards MBA, sir. And Mhm. one of my friend and colleague was a student of your in 2010 or 11 in Bangalore, sir. Mhm. He also recommended you to me, and I had talked to various of your 10, 15 of your earlier students Mhm. uh, because I was not very confident about verbal. I was good It at looks like it, Simrat. I mean, and the way you're talking, मुझे समझ आ रहा है कि it would have been very difficult for you to do the entire verbal, but you got verbal 45, which is so phenomenal. I can't tell you. So how सर did this happen? मैंने I mean, जब मैंने पहले आपकी क्लास लगाई सर, तो मैं पहले दिन ही हो गया यार यार कैसे कर रही हैं सर ये सब कुछ, मतलब फिर आपने मतलब सारा बताया था कि कैसे वर्कर को हैंडल करना है कैसे नहीं. सो आई hmm वाज फर्स्टली ओवरवेल्म्ड कि हाउ सर इज डूइंग दैट. एंड व्हेन आई started the pre-work, sir, the main thing is you can only teach us the techniques which are useful to us, but hmm अपना मतलब ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਲਾਉਣਾ ਸਰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਹੈ ਕਿ how much we are giving ourselves into the questions and exams. hmm तो मतलब जो आपने सिखाया उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस है. मतलब okay. फर्स्ट मैंने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, मतलब टू अप्लाई योर टेक्निक्स एंड टू रीवॉच द वीडियोस. ते मतलब टाइम लग गया सर, बट ओवरऑल इट वाज मतलब आई हैव ओनली वन रिग्रेट दैट आई वाज ओवर कॉन्फिडेंट अबाउट माय क्वांट. एंड it it did मतलब I suffered in the exams. I know so many people say this again and again these days that they focus so much on verbal that I say right from the beginning, don't neglect quant because it seems you were very good at quant, right? I mean, यस सर, आई वाज मतलब मैं प्रियांशा से ही बात कर रहा था कि hmm, मैंने क्वांट थोड़ा सा मतलब रह गया, मतलब स्पीड hmm, इशू बहुत हुआ सर. मतलब पेपर में ना एक तो थोड़ा hmm, सा प्रेशर होता है और एक तो थोड़ा मतलब 2-3 सवाल डाटा सफिशिएंसी के वक्त मतलब टाइम लगा उनपे, hmm, hmm. तो मिस्टेक्स हुई सर. अच्छा. मतलब जो आपने सिखाया मैंने आई आपको जस्ट कुछ अनयूजुअल लगा एग्जाम में? डिड यू फील दैट देयर वाज समथिंग दैट वाज आउट ऑफ व्हाट यू हैड स्टडीड और इट वाज नो वेरी मच सर, सिमिलर टू व्हाटएवर यू हैड डन? प्लीज टेल. was very much similar. I was just applying to your techniques, मतलब with practice मतलब अपना subconscious mind बह जाती है सब चीजें. So, tell us through SCCR and RC what troubled you the most. Probably Quant did not, but your score is completely reversed. Quant was a comfort, but Quant you didn't score as well. And it's been a two consecutive stories like that. Yesterday we had a 770 scorer, verbal 48, and Quant still 49. So, I mean, I don't know how this is, but people are not taking it as seriously, maybe. But we have also had too many Quant 51s in the recent past and 50. So that's not the point. Point is, what was your actual challenge? Was it that after so many years of service, sitting itself was a challenge, concentration? What was SCCR, Sitting RC? सबका sitting बताइए. sitting was a challenge, sir, because 9 to 5 is job and sometimes 7:30 8 भी बज जाते हैं in the field. And तो. there was a lot of there was a family problem in my uh, हम्म, मतलब किसी की डेथ हो गई सर हम्म, फैमिली में, इसलिए मैं थोड़ा सा कंसंट्रेट नहीं कर पाया. बट आई जस्ट डेली मैं करता था 7 से 8 घंटे रात को लगाता था, क्योंकि मेरी पहले से ही रूटीन बनी हुई थी रात को स्टडी करने की. लाइक आई वाज हम्म, स्टडिंग अप टू 2 इन द मॉर्निंग. हम्म, तो मतलब ये चीज़ इधर के अपना प्रैक्टिस शाम को मतलब टाइम दे सका, और वीकेंड को सर सैटरडे संडे ऑफ होता है तो सैटरडे संडे हम्म, को टाइम देता था. एंड इन सर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पहले मुझे बहुत मतलब दिक्कत आई कि टोन को कैसे पहचाना है. बट आफ्टर solving about 150 passages, I got हम्म, confident about the octave techniques. हम्म. How about CR and SC?
सर एससी तो एससी ने काफी ट्रबल किया होगा आपको, बहुत ज्यादा एस। एससी में बहुत ट्रैवल किया सर एडजेक्ट, मतलब बट द थिंग इज सीआर तो कंपैरेटिवली इजी था सर Mm-hmm. एज कंपेयर टू आरसी एंड एससी सर. Yeah, because if you're good at math and logic, I think automatic, and you are in that field, Yes, so the आप thing, तो I you're have in. not applied. I did your techniques as quant sir. Mm-hmm. It's just like formula you have given the technique. I have to focus on it. I just Mm-hmm. practice which you have taught. मतलब Mm-hmm. कि बिना किसी उसके के मेरे वर्बल में मैंने दिमाग बिल्कुल जीरो कर दिया था. जैसे आपने बोला था कि Mm-hmm. बस जो आता है उसको छोड़ दो पीछे. कि Mm-hmm. नेवर ट्राई टू कि क्यों मेरा गलत हुआ उसके बारे में नहीं जाना. देखो Mm-hmm. कि कैसे गलत हुआ, मेरी टेक्निक पर क्या टेक्निक Mm-hmm. पर कैसे. तो ये किया सर. और क्वांट में वो आपने अप्लाई नहीं किया उतना अच्छे से, सर मतलब यू वर क्वांट कॉन्फिडेंट कि मेरा हो ही जाएगा शायद, इसलिए भी हो सकता है ये। सर टाइम मैनेजमेंट इशू हुआ सर क्वांट में. स्पीड स्पीड मैटर. Understandable, understand. And did you feel that the exam had any challenge with pacing, concentration, stamina, or did you find the questions were different or something? No sir, question were easy, मतलब like I was solving, but in quant I have faced some challenges sir. अच्छा Data अच्छा. science questions. What advice you would have for people? They should not do this. ये गलती ना करें, और ये कौन सी चीज है जो करें जरूर, ऐसा बताइए. पहली बात तो ओवर कॉन्फिडेंट मत हो. किसी का कोई पहली टॉपिक बात तो क्या बोल रहे हैं आप, सॉरी? ओवर कॉन्फिडेंट ना हो सर कोई भी, मतलब कि ये मुझे आता है मैं ऐसे ही हम्म. करूँ. मतलब जो प्रीवर्क मिलता है क्लास से पहले सर वो करे ही करे. हम्म. और सर टाइम टाइम डेडिकेशन, मतलब टाइम देना पड़ता है, टाइम देना पड़ेगा इनको. हम्म. और क्वांट और बबल बोथ के जो साथ आपकी जो क्लासेस थी वो करें सर. सॉरी अच्छा फॉर, अच्छा. मतलब आई एम नॉट इन कंफर्टेबल इन हिंदी एंड इंग्लिश सर. अच्छा, दोनों में मुश्किल होता है आपको, आप पंजाबी बोलते हो मोस्टली? यस सर, अच्छा अच्छा. मतलब हमारा काम ही सर पंजाबी में चलता है ना. अच्छा. आई मीन कमाल है यार आपने जो किया है. आई मीन डोंट यू थिंक गाइस his scoring 45 in verbal is outstanding? Tell me everyone, what do you think? Absolutely, absolutely. इसीलिए I mean, थोड़ा this सा. is unbelievable, because we've had many students earlier also, maybe you were inspired by some of them, that they were Hindi medium students. I know there was some, फ्रॉम राजस्थान सर. yeah, that Amit Kumar and other people, and we have had. But this is so heartening to know that a person like you, who puts in the work and gets verbal 45, and obviously you're good at quant, so if you had probably not neglected, you would have had a 770 with 50 and 44. Usually the score is 770, so you have 48 and 40, one more mark, and I think you would have been in the 99th percentile bracket. तो So सर thank. बाद में पछताने का कोई फायदा नहीं है. मतलब मैं यही सजेस्ट करूंगा कि Hmm. अपना प्रॉपर टाइम डिवोट करो. ये सीरियसली करना है, मतलब ऐसा नहीं कि आप क्लास लाई थी जाके अपना बैठ गए. मतलब डेडिकेशन लानी पड़ेगी. Hmm. टाइम जरूरी है जो सर पहले लेक्चर देंगे. बिल्कुल बिल्कुल. परफेक्ट. और थैंक यू फॉर योर टाइम, एंड प्लीज कंटिन्यू. आप कहीं अप्लाई कर रहे हो तो मेरे कोलीग गौत्री से बात कीजिए, ही हाँ विल जी. हेल्प यू. चलिए. राइट. थैंक यू समृद्ध. बाय बाय.